पिछली क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू और फिर क्वेश्चन बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या करा है क्वेश्चन नंबर 1? How many number of electrons? So how many number of electrons flow per second, time y per second, in a conductor to provide a current of 1 ampere? How many number of electrons that should flow per second in a conductor to provide a current of 1 ampere? Okay, so given 1 ampere current, so I equal to 1 ampere current है। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड, तो हमें फाइंड करना है n। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट अगर 1 सेकेंड में बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो यानी कि क्वांटिटी हमें फाइंड करना है इधर। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय टी, और Q इक्वल टू लिखेंगे, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, सो एन ई डिवाइडेड बाय टी, और हमें फाइंड करना है n, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो n इक्वल टू हुआ ये आई टी डिवाइडेड बाय ई, करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर इंटू टाइम दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये हुआ, डिवाइड कर दो इसे और कमेंट में करो आंसर कितना आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? सो द आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 एम्पियर करंट बना रहे हैं। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। A potential difference of 20 volt, a potential difference of 20 volt, potential difference दिया है 20 volt is applied across a ends of a resistor, एक resistor है उसके across potential apply किए। ओके, पोटेंशियल है 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस है उसका एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, ओके 5 ओम रेजिस्टेंस है। व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टर, तो क्या पूछे, एक रेजिस्टर दिया हुआ है, ओके ड्रॉ कर लेकर रेजिस्टर, एक रेजिस्टर दिया हुआ है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, आर इक्वल टू है 5 ओम। ओके, तो ये टर्मिनल मान लो ए बी दो टर्मिनल्स हैं, तो ए बी, ओके, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पोटेंशियल, तो हमें फाइंड करना है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। सो व्हाट इज आई?
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी राइट V इक्वल टू आई आर, V equal to IR, then I equal to V divided by R. So right, V is 20 volt, R is 5. So this one 4 ampere current. So hence I equal to 4 ampere current. This is our answer. एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, उसका अक्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट, कितना करंट है हमें फाइंड करना है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है 4 एम्पियर। नेक्स्ट, an electric bulb draws a current of 0.35 एम्पियर फॉर 20 मिनट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितना करंट है उसमें, दिस वन करंट आई, तो ये दिया हुआ है करंट आई, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्क्यूट। तो हमें चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करना है। 0.35 करंट है 20 मिनट्स में, okay? और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस सर्क्यूट में। तो गिवन वैल्यूज लिख लो, आई इक्वल टू है 0.35 एम्पियर, टी टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, सो टी इज 20 मिनट। और फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें फाइंड करना है क्यू, ओके ये साइन चेक कर लो। आई एम्पियर में है, टाइम मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 60, सो टी इक्वल टू 1200 seconds, 1200 seconds, and we know current I equal to Q by T. So Q equal to is I T. Calculate this one value calculate करो, कितना आंसर आता है बताओ। So right, Q equal to 0.35 into 1200, so Q charge is 420 coulomb, 420 coulomb. Note down. Next one, a cell of EMF. So cell of EMF E दिया हुआ है, cell of EMF E is 2 volt and internal resistance small r दिया हुआ है, internal resistance R is connected across a resistor of resistance, तो R दिया हुआ है। Find the terminal potential difference of the cell। तो डायग्राम बना लेते हैं। एक रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर अ सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल को कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, सो E इक्वल टू 2 वोल्ट, E इक्वल टू 2 वोल्ट रेजिस्टर है। सो इंटरनल रेजिस्टर ऑफ बैटरी और सेल इज 1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R इज गिवन 9 ओम, और क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो अक्रॉस द सेल हमें पोटेंशियल फाइंड करना है V। तो फॉर सेल, अभी सेल से करंट निकल रहा है ना,
तो इसका इक्वेशन होगा E इक्वल टू V प्लस आई आर, और V इक्वल टू I इंटू आर, वे फॉर सेल I इक्वल होता है फॉर्मूला E डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो V इक्वल टू E R डिवाइडेड बाय R प्लस R, E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये यहाँ लिख देता हूँ। सो V इक्वल टू E दिया हुआ है 2, पोटेंशियल EMF 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। ओके, तो ये हुआ 18 डिवाइडेड बाय 10, 18 डिवाइडेड बाय 10, so it is 1.8 volt, 1.8 volt। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 40 watt automobile headlight designed for 2 volt 12 volt, so 12 volt। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसका, एक ऑटोमोबाइल की हेडलाइट है जिसका पावर दिया हुआ है 40 वोल्ट, डिजाइन फॉर, इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। एक ऑटोमोबाइल हेडलाइट है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पावर है 40 वैट, पोटेंशियल है उसका 12 वोल्ट। सो पावर वी नो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P। फाइंड करो R, सो फाइंड R वैल्यू। सो R इक्वल टू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, 12 स्क्वायर 144 divided by 40, so answer is कितना आंसर 144 divided by 40, it is 3.6 ohm, 3.6 ohm। Next question, charge through a cross section of a conductor is Q equal to 2t square minus 5t कूलम। तो एक चार्ज दिया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन है उसमें इतना चार्ज है, फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट। तो इतना चार्ज बह रहा है एक कंडक्टर में, तो पर्टिकुलर टाइम 2 सेकेंड पर कितना करंट है। ओके, तो हमें फाइंड करना है आर। इस टाइम पर टी इक्वल 2 सेकेंड में अगर इतना करंट फ्लो रहा है तो करंट कितना है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना करंट है। सो आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो इक्वेशन क्या बताता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चार्ज कितना बह रहा है, वहाँ से मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट है, आई। सो राइट, सो आई डिफ्रेंशिएशन करना है इसे, 2t² माइनस 5t डिवाइडेड बाय डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस
1। ठीक, तो ये हुआ 2 into 2 into t -5 सो ये हुआ 4t-5 बट t दिया हुआ है यहाँ पे कितने टाइम पर करंट फाइंड करना है हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड है सो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना करंट है फाइंड करना है तो इसको इक्वेशन में पुट कर दो I इक्वल टू 2 into 4 -5 so this one 8 - 5 and it is 3 ampere so current is 3 ampere. Next one, write down. Next question. The number of density of free electron is estimated to be 8.5 × 10 raised to 28 per meter cube. So n is given number of free electrons in a copper wire. A copper of length, so length is given 5 meter and area of cross section 1.5 millimeter square. A is given. So this one A. Area is given, length is given, is carrying a current is given. Calculate the drift velocity of the electrons. Okay. So here given quantities, right? First one n equal to 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. Next length is given, right? 5 meter length. Next area of cross section A is given. This one 1.5 millimeter square and is carrying current is given I is 3 ampere. Calculate the drift velocity. Here asked to calculate drift velocity. And how long does an electron take to drift from one end of the wire to its other end? So क्या करें, मान लो एक कंडक्टर है, एक एंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड में जा रहा है तो कितना टाइम लेगा t. First we have to calculate with drift velocity. After that, time taken by electron to drift from one end of a conductor to another end. Okay. Now convert all this value in terms of SI unit. So length is given in meter, area is in millimeter square is there. So convert in SI unit, meter square. A equal to 1.5 into 10 raised to -3 into 10 raised to -3 meter square. So area is 1.5 into 10 raised to -6 meter square area. No. So we know current I equal to NEA VD. So VD equal to I divided by NEA. NEA. So right, VD equal to, so VD equal to current is 3 ampere. Current is 3 ampere. Next number of electrons 8.5 into 10 raised to 28, 10 raised to 28 into N E charge of an electron 1.6 into 10 raised to -19 into area 1.5 into 10 raised to -6, 10 raised to -6. So VD equal to 3 divided by, now multiply denominator 8.5 into 1.6 into 1.5. So denominator is 20.4
into 10 into 10. Now Vd equal to drift velocity equal to this one 0.147. Okay, this one 28 minus 19 minus 6, 10 raised to 3, and this one into 10 raised to minus 3 drift velocity second meter per second. Next, calculate time. Calculate time. So we know time t equal to displacement by velocity. So displacement is displacement. How much length is there? 5 meter. So 5 divided by velocity 0 point. This one velocity. Okay, 0.147 into 10 raised to minus 3. So this one t equal to t is 34 into 10 raised to 3. 10 raised to 3 second. This one our t. तो एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है 34 इंटू 10 रेज टू 3 सेकेंड्स दिस वन और उससे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 0.147 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. Next question. Right. Current 2 ampere. Current is given 2 ampere I flowing through a conductor of resistance 4 ohm. Find the electric energy. Find the electric energy consumed by the conductor in 10 seconds. I equal to current दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी. हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड करना है. एट व्हाट टाइम? एट टाइम 10 सेकेंड. सो राइट फर्स्ट वन E equal to, okay, energy we know E equal to VIT or E equal to I square R T, because here potential is not given, only current is given. So write this equation in terms of IRT. Now substitute all those values where V equal to I, write V equal to IR, V equal to IR, V equal to IR. Now substitute values. E equal to I square, 2 square, current is given, 2 square into resistance of a conductor is 4 into at what time 10. ओके, अगर एक कंडक्टर में 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, 10 सेकेंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. सो ई इक्वल टू होगा ये 4 इंटू 10. सो ई इक्वल टू इज 160 joule. 160 joule. So that conductor is consuming energy 160 joule in 10 seconds. Right, next one. Find the, okay, what is given? Find the average drift speed of free electrons. So average drift speed.
So we have to find Vd, drift velocity. In a copper of cross section area is given A 10 to power minus 7 meter square and current 1.5 ampere and having free electron density 8.5 10 raised to 28 meter per meter cube. So right, find the average drift speed of free electrons in a copper wire. So a copper wire दिया हुआ है, cross section area. So Vd we have to find. Cross section area A is given. So how much it is? 10 to the power minus 7 meter square. Minus 7 meter square, carrying a current of. So how much current is flowing in this one? Current I equal to 1.5 ampere and having free electron. So in copper wire, number of free electrons is given. That is N. N is 8.5 into 10 raised to 28. 10 raised to 28. 10 raised to 28. Now we know I equal to NEAD. NEAVD. So VD we have to calculate. So write VD equal to 1 divided by NEA. Current is given. So current is 1.5 divided by number of electrons 8.5 into 10 raised to 28 into 1.6 into 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 into I'm writing here area. So area is 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 7. Now VD equal to 1.5 divided by, now multiply denominator, 8.5 into 1.6 is 13.6 into 10 raised to 2, 10 raised to 2. One minute. 10 raised to what 10 raised to minus 19, 1.6 10 raised to minus 19 into 10 raised to minus 7 is 10 raised to 2, correct. So right answer 1.5 divided 13.6. 1.5 divided 13.6, it is 0.110 into 10 raised to minus 2 meter per second, or Vd equal to 1.10 into 10 raised to minus 3 meter per second. This is the average drift velocity of free electrons in a copper wire. आज के लिए बस इतना ही. Remaining question 5 marks question in next class.